Hello friends, welcome to another video. Today we will be discussing something about Ultratech Cement, and we would know what's the fair value or the intrinsic value of this particular stock. Well, Ultratech Cement in the cement sector is the stock which is actually trading at a very high price now. After Shree Cement, this is the second stock in cement sector where the price is like pretty hefty. सो दोस्तों आपको पता होगा ये करीब 4,200 के लेवल पे अभी ट्रेड करती हुई स्टॉक है। तो सीमेंट सेक्टर में अगर आप देखो तो ये इट्स लाइक 2 नंबर पोजीशन पे है, बट इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इसका एक्चुअली इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होना चाहिए और इसका फेयर वैल्यू आज के डेट पे कितना होना चाहिए, एंड उस हिसाब से हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि ये राइट टाइम है स्टॉक में एंट्री करने के लिए या नहीं। तो दोस्तों क्विकली मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। So in the screen, if you see that I have actually shown some of the basic fundamental points for the analysis how the stock is behaving. First of all, if we look into this particular graph, we see that it's a graph where it shows the all-time data. So 2005 से लेके it's showing 2020. So Ultratech Cement it's been trading in the stock market for like over 15 years now, and from a point of 100 rupees it has grown to 4,000 rupees. So it's like you can see like almost 40 times the stock has become. If you come into the fundamentals, we see that the current price that the stock was traded at last, that is 27th, its last trading day, it was trading as 4,686, whereas if we look into the 52-week high and low, we see that it's 4,904. So ये ऑलमोस्ट अपने 52-week हाई पोजीशन पे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम इसका टोटल मार्केट कैप देखें तो मार्केट कैप इज शोइंग एज लाइक 1,35,000, which is also very huge because it's like a big company. It's not a mid cap, it's actually a large cap company. Looking into the more fundamentals, we see that the reserves is also 35,000 crore in reserves. The earning per shares as compared to the last 12 months, 1 year, is like 126. So every share has grown 126 rupees on an average in the last 1 year. The dividend yield is 0.23%, and then if you see the profit variance, that is the percentage how the growth of the company is, it's like 9.2%, it's growing annually. And ये जो एवरेज आप देख रहे हो ये 10 साल का एवरेज है। ऐसे ही अगर आप सेल्स देखो, सेल्स एवरेज ऑफ लास्ट 10 years is 19%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 2000 crore, इट्स एन एवरेज ऑफ द लास्ट 10 years। तो मैंने 10 साल का इसीलिए लिया है क्योंकि जो ये फॉर्मूला हम बेंजामिन ग्राहम का जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं, इट्स एक्चुअली बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म रेशियो, बिकॉज ये इंट्राडे ट्रेडिंग का पोजीशन बनाने के लिए नहीं है। दिस इज समथिंग वेयर यू हैव टू इन्वेस्ट द मनी एंड यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम टू एक्चुअली रीप द बेनिफिट्स। और परसेंटेज ऑफ promoter holding अगर हम देखें so 60%. So 60% of the stock, that is actually the investors, if you look into it's the promoter holding. So there are a lot of people who are actually invested, से ये क्लियरली पता चलता है। तो दोस्तों क्विकली अपने नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं, जहाँ पे एक्चुअली मैंने फॉर्मूला पे सारे कैलकुलेशंस किए हुए हैं। सो फॉर्मूला में हम क्या क्या यूज़ करेंगे, एक तो हमको चाहिए एपीएस जो कि अभी 126 चल रहा है, एंड इसका जो सेल्स वेरिएंस है जो कि 19। तो ये दोनों चीज़ हमको चाहिए होंगे नेक्स्ट फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए। तो इस फॉर्मूला में अगर आप देखो तो फेयर वैल्यू का फॉर्मूला बताता है अर्निंग पर शेयर इंटू 8.5 प्लस 2G। जी यहाँ पे मेरा हो गया ग्रोथ वेरियंस इंटू 4.4 डिवाइड बाई करंट यील्ड ऑफ 20 ईयर्स। तो करंट यील्ड ऑफ 20 ईयर्स तो ऑलमोस्ट फिक्स्ड है, आपको गूगल से ही मिल जाएगा, विच इज एक्चुअली 7% नाउ, 7.128। ग्रोथ जैसे कि हमने देखा था 9.2, एंड अर्निंग पर शेयर हम देखे थे 121, 121.22। अगर आप इस फॉर्मूला में इसको डालो तो एक्चुअली इफ यू सी दैट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक, लाइक हम जो यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट का कैलकुलेट कर रहे हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट का ये इंट्रिंसिक वैल्यू इज कमिंग एज 2,000 रुपीज। तो दोस्तों अगर आप देखो अभी जो स्टॉक है वो एक्चुअली अपना जो इंट्रिंसिक वैल्यू उससे 2 times पे चल रहा है। तो विच अगेन इज समथिंग जहाँ पे एक बहुत बड़ा चांस है कि अगर कंपनी का परफॉर्मेंस सही नहीं रहा, या फिर कंपनी का कोई भी नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में आता है, या फिर कंपनी डू नॉट पोस्ट अ गुड क्वार्टरली रिजल्ट्स और समथिंग लाइक दैट, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द कंपनी कैन करेक्ट अ बिट। क्योंकि अगर आप देखो ये इंट्रिंसिक वैल्यू, दिस इज एक्चुअली द फॉर्मूला ड्रिवन बाय बेंजामिन ग्राहम। तो उनके फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली ये 2000 बता रहा है, whereas the closing price, लास्ट क्लोजिंग प्राइस जिस पे शेयर एक्चुअली ट्रेड कर रहा है, दैट इज 4,686। 4,686 इज लाइक समथिंग एज अ डबल। सो अगर जनरली आप अगर मैंने मेरे पहले वीडियोस देखे होंगे, मैंने कोटक महिंद्रा के लिए किया है, मैंने रिलायंस के लिए किया है, मैंने
आपके सामने और कुछ कंपनीज का यहाँ पे एनालिसिस किया, जैसे बजाज फाइनेंस का, तो वहाँ पे मैंने क्लियरली बताया कि 10% प्लस माइनस मैं लेके चलता हूँ कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपका जो अभी का प्राइस है जिस पे स्टॉक ट्रेड हो रहा है वो 10% ऊपर और 10% नीचे में कितना उसका हॉरिजन है जिसमें वो ट्रैवल कर सकता है। बट यहाँ पे ये कैलकुलेशन काम नहीं आ रही है, बिकॉज अगर आप देखो इसका 10% 2200 ऊपर की तरफ एंड लो इज 1800 एज पर द इंट्रिंसिक वैल्यू, बट इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास भी ये नहीं है एंड इट्स लाइक ट्रेडिंग ऑन डबल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो से मैं ये कंक्लूड करना चाहूँगा कि बेंजामिन ग्राहम का जो ये फॉर्मूला हमने पहले अपने दूसरे स्टॉक्स के एनालिसिस में यूज किया है, इट डजंट ऑलवेज गिव यू द एग्जैक्ट रिजल्ट, बिकॉज ये प्योरली बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स एंड फ्यूचरिस्टिक वैल्यू है। तो ये फ्यूचरिस्टिक वैल्यू 10 साल का एवरेज लेके वो चलते हैं, एंड किसी किसी स्टॉक में ऐसा होता है कि लास्ट 10 साल में पहले 9 साल शायद उतना परसेंटेज प्रॉफिट नहीं रहा हो, बट लास्ट 1 साल में कंपनी ने शायद कुछ बेहतर काम किया हो जिसके चलते दे एक्चुअली हैव डन अ लॉट ऑफ प्रॉफिट्स. So it's not always necessary that you get the same amount of profits every year. The profits can vary, and because of this variance, we are actually calculating on average value of this particular. So fair value as per the formula is 2000, but again, since the stock is trading as 4686 as for the last closing price, तो हम ये डिटरमाइन यहाँ पे नहीं कर सकते हैं कि एग्जैक्टली इसका फेयर वैल्यू क्या होना चाहिए। बट अगेन बिकॉज यहाँ पे उसने बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट दिखाया, अगर आप ग्राफ भी देखो तो it has actually constantly kept on growing, and because this company has got a lot of market capital with a huge cash reserve, definitely it's a recommendation that अगर आप चाहो आप इसको SIP मोड में you can keep building a portfolio. आपका अगर स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो आपने बना रखा है तो इसमें मेक श्योर करो, अगर आप सीमेंट सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका कुछ नहीं हो तो एटलीस्ट एक स्टॉक आपका इस पर्टिकुलर कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट का होना चाहिए. So that is what I would recommend from this calculation. So thanks for listening to my video, friends. If you have liked this content, please share my channel, and also to subscribe to my channel, and please suggest if there is something else that you would like to hear, or you want me to make videos on. So keep looking for my channels, and I'll be back with a next one as soon as possible. Thank you so much. Bye bye.